I use a lot of autotune, let me just tell you. Do you? Let's begin with that. You know, when you have a technology and everyone's using it, you're going to be really, really stupid not to give into it. There are so many fantastic voices, original voices who have their own style. But whoever is even getting a chance to sing has sound like Arijit. I mean, he's doing his thing and he's fantastic. But then why the clones? Unless an actor insists कि नहीं यार मुझे फला सिंगर से ही करना है ना उसके साथ मेरी एक वो वाइब मैच होती है. But even the actors these days don't hit गाना चाहिए बस. It's not the right thing. You should give in to live and real. Issue with the remake as a concept. The song is not just the voice. The song is the lyric. The song is the composition. The song is the feeling. वो आप वो लेकर उसको एकदम उसको खिलवाड़ कर दोगे तो फिर ना वो एसेंस रही ना वो गाना रहा. Then you say why यार. Coming back to reality shows and coming back to singers, there was no script. कुछ भी हो जाता था, हम लोग रिएक्ट कर लेते थे, कुछ गा लेते थे. अगर किसी का गाना पसंद भी नहीं आता कह भी देते थे, वो बेचारा रो भी देता था. अभी तो जब आगे था फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, आई लव इट, फैंटास्टिक, सब यही चल रहा है. कैन नेवर डू is disrespect your audience. The audience are there because you're singing for them. क्या होता है कई बार आप परफॉर्म कर रहे हो एकदम सामने कोई कंटिन्यूसली आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक, जब भी कुछ हाथ पकड़ने आ जाते हैं, ये करने आ जाते हैं, बट कुछ भी हो जाए यू हैव टू कीप योर कूल. आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है. Hi guys, this is Ankita. You're tuned to Bollywood Bubble, and today we are going to talk to someone जो auto tune के ज़माने में आज भी गाना गाने में विश्वास रखते हैं. Let's welcome Shaan. Hi Ankita. How are you? I use a lot of autotune, let me just tell you. Do you? Let's begin with that. Then let's touch the touchy topic right in the front. No, it's not that. It's just that, when you have a technology and everyone's using it, you're going to be really, really stupid not to give into it. And, if someone from 6 can go to 10 and you want to not use it, you're going to still hang at about 8 and 9. You may as well also get to 10. But is it the way? Because you have come from the school of music where Riyaz was the foundation of how you become singer. You can't let autotune won't substitute Riyaz. The confidence that you get when you hit a note and the magic that it creates when you sing at a close to 440 is nothing that can be replicated in the post when someone's singing something, then you pull it up. So you might pull up the note, but it'll still not sound tuneful. So this is just a little that fine, the little thing. And also because it's just the way it is. It's a process now. It has to go through that. In the age of where technical equipments are used to make music, to somebody who knows how to, play instruments, and from there to here, do you think the music tone also changes? I mean, when you create music on the technical spectrum. Of course. I mean, the magic of analog and live, it's happening at the same time. But the only issue today is that there is no room for any fault. Since everything can be cleaned post, everything can be perfected, and our ears have also got very attuned to that. So when, of course, there are indie pop artists, jinga janga janga on the guitar and they sing and, no one cares whether they are in tune or not. And they have a fantastic audience for that. But now when you have a reputation to take care of, you start wondering, you start getting a little too worried. It's not the right thing. You should give in to live and real. But that magic is very different. Beautiful. You can't compare that. The only song I got to sing like that, live with a band, was the song from Raju Chacha. There were two actually. One more song from a film called Officer, but that was live with a band. Wow. So, and this again was unplugged. So, it's very interesting. Hats off to Jatanji, Lalitji especially, they tolerated me for that long. But it happened and it was nice. That Toone mujhe pehchana nahi. Mehboob Studio, the iconic Mehboob Studio. So yeah, I can say I had that. Then the ADAT recordings where, if you made a mistake, you'd have to wait for at least 5 bars for the tracks to come together and then you could sing the next line. So you better not make too many mistakes. To, of course, now where you can punch in a single word, half a word if you have to. Shaan, when you see the today's singer, the today music, how it goes, do you feel वो जो एक era था, किशोर दा, रफ़ी साहब, then you, Sonu, Udit, Shreya, Alka ji, वो era of, as we were discussing, the singers who stay. We don't have the singers who stay, the voice which stays with us. Do you agree?
every generation has this grouse, and then the next generation grows up, and then they talk about their singers as the singers who stay. So I mean, I think In the last, it's- if I have to interject you, apart from Arijit, in the last decade or so, I don't have a voice which, as a 90s child, I could say, stays with me. okay, you have a point there, but I think what's happened in the recent past, of course, Arijit gets the lion's share of the good songs, and today, because even with composers, there's I think a certain amount of insecurity that is in the music, because the business is big, and it's also about numbers. So and also it's not as expensive as it used to be, the whole music production business. So to get in a big name that will guarantee a certain amount of stature to the song, you rather push on that, which I think is a little sad, because at the end of the day there are so many fantastic voices, original voices, who have their own style, but whoever is even getting a chance to sing has to, I've said this before also, has to try and sound like Arijit. I mean, he's doing his thing and he's fantastic, but then why the clones? I mean, do your own thing, because if they can't get him, at least they'll getting a closer voice. So it stems from some kind of insecurity, I feel, that people aren't willing to take a chance. You made a great song, it's a fantastic setup, get a great voice and sing it. Let him sing it or her sing it in her own style and space. You spoke about sounding like a particular singer. I remember आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप आमिर के लिए चांद सिफारिश गा रहे थे, you tried your best not to sound like Udit ji at that time. But nobody wants to pay that kind of attention to detail now. And not even then. By the time we got in, that there were only very few actors who had a connect with a singer. I mean, it was not like that Mukesh sang for Raj Kapoor Saab, or Ravi Saab sang for those handful of artists who only insist that he should sing, and Kishore Da would sing for Amitabh Bachchan. तो लगता था कि बच्चन साहब ही गा रहे हैं, राजेश खन्ना साहब ही गा रहे हैं. तो वो चीज़ें तो निकल गई थी. But now even more what has happened is that even the energy of the actor, even that is not being matched up to. अब देखो visually नाच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, singing हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता ये क्यों होता है. But that's just an individual take. I had an issue with that particular situation is because literally the last perfect casting is Udit Narayan, Amir Khan. Yeah. And I had just never sung for Amir Khan until Fana. So when I would think of singing for Amir Khan, because I'd love to always try to, like I said, match the energy of the actor. चाहन सिफारिश ये आ रहा था मेरे दिमाग, चाहन सिफ नहीं हो रहा था. So I had to really fight that feeling. Not because I was thinking Udit ji, I was thinking Amir Khan नहीं, लेकिन आवाज़ निकल रही Udit ji की, क्या करूँ? बट आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला. आज के टाइम में किसी भी एक्टर का किसी सिंगर के साथ में एसोसिएशन नहीं जोड़ पाती. हमें आदत हो गई थी कि ऋषि कपूर साहब तो कुमार सानू का एक आवाज वी कुड सेंस द रोमांटिक for me it's still Kishore Da only for Kishore Da, exactly. But you don't have that with today actors, even for the female voices, the voice which connects to them. No, that is true. I don't see, today everyone knows it's playback, and everyone also knows that the song has its own identity from the movie. Most of them are promotion songs, most of them are just background songs, which is why I think that's a detail that is not being as much not being paid attention to too much, unless an actor insists कि नहीं यार मुझे फला सिंगर से ही करना है, उसके साथ मेरी एक वो वाइब मैच होती है. But even the actors these days don't hit गाना चाहिए बस. क्या हम हिट के कल्चर में हम एक चीज़ और भी जो बहुत ब्लेटेंटली मिसयूज कर देते हैं, वो है हमारे आइकॉनिक सॉन्ग्स को रीमेक करना. Why I ask you, because you are hosting a show on किशोर दा. I don't think इससे बड़ी ऑडियोग्राफी किसी के पास होगी सॉन्ग्स की. बट व्हेन पीपल अटेम्प्ट टू रीमेक अ सॉन्ग, दे फॉरगेट दैट दे आर लेटिंग ऑफ एन एसेंस कंप्लीटली. डू यू एग्री? No, what happens is that a song, however popular it is, एक lifespan होती है, and then it dwindles away along with its own fan and its own generation. वो गाना जो है धीरे धीरे slowly the graph kind of eases out. Some more, some less, some stay longer, some get resurgence आती है. So in a way, to make a cover, to bring the song back, a beautiful song needs to stay forever. So I have no issue with the remake as a concept, because the song is not just the voice, the song is the lyric, the song is the composition, the song is the feeling, and that feeling needs to be revived, but done with the right aesthetics, the right ethos, the right sensibility को वो आप वो लेकर उसको एकदम उसको
बहुत बुरी तरह से उसके साथ आप खिलवाड़। खिलवाड़ कर दोगे, तो फिर ना वो एसेंस रही, ना वो गाना रहा, देन यू से वाह यार, क्यों यही बनाया? करना था तो क्यों किया. So it's about how they execute the project, not about the concept on its own. Now when I did दिल क्या करे जब किसी को, Coming to that. a lot of people thought कि वो नया गाना है, उस जनरेशन में उस जो generation नए में, बच्चे जो because the videos of it was also हाँ, one they'll of remember most it from there. popular. But if I दिल क्या करे जब किसी, तो बोलेंगे यार ये गाना ही बिगड़ गया ना. So you have to give it a little tweak, make it today, make it contemporary, but don't mess with it. I'm not saying anyone has messed with any song. I'm just saying generally. In general. Shaan, when you sang दिल क्या करे मुसु मुसु हासी, एक स्माइल आपकी वॉइस में वो जो बोलते हैं ना, you could always sense somebody smiling and singing. वो image of fighting आया था आपके पास कि मेरे को ऐसे ही happy songs आ रहे हैं, nobody wanted to experiment with you in any other tone of the songs. No, they knew कि मुझे आप शान को कोई भी जॉनर का गाना दे दो. I've done item songs, I've done dance Yeah. songs, I've done sad songs, और वो हंस के ही गाएगा. So there's no way out. No, I'm kidding. It's not true like that. But I do believe that a song has to give away a positive emotion. Even if it's a sad song, there should be hope. If it's a dance song, there should be a positive flamboyance. छिछोरापन नहीं होना चाहिए. Even if it's a dance, in the tonality, there should be heroism. There should be a positive character sing the song. So वो एक block है. Otherwise, I probably could have done other things. But keeping that in mind, I've tried to get into the genre, which is why मेरी mimicry बहुत कम है. You don't have anyone who sounds like me, because मैं ही खुद को बार-बार बदलते रहता हूँ. Now recently, I have stopped smiling too much when I sing, because people don't appreciate that anymore. उनको दर्द और पसंद है. दर्द तो होता नहीं मुझसे, लेकिन एटलीस्ट वो स्माइली वॉइस थोड़ा कम करता हूँ. शान, मेरी सबसे पहली मेमोरी आपके साथ थी, मैं आपको रोल होने से पहले भी बोल रही थी, जब मैंने आपको एज अ होस्ट सारेगामा पे देखा था. मैं वो विजुअल कभी पार्ट नहीं कर सकती. वो आपका 5 से 6 साल का एक वो पूरा एक्सटेंड था. एंड एक ऐसा टाइम था रियलिटी शोज में जब आवाज़ें निकलती थी, जब हम एक आवाज़ ढूंढते थे. आज के दौर में वो कहाँ चला गया? क्योंकि अंकिता, आपके सारे सवालों में ना कहीं के कल का सुनहरा वक्त और आज ये क्या है, ये चल रहा है यार. ये थीम है हमारी इंटरव्यू की. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद मेरे जैसी जनरेशन के जिन्होंने म्यूजिक को ड्विंडल होते हुए देखा है. और मैं बोल सकती हूँ ऑन कैमरा, हमारा म्यूजिक ड्विंडल हुआ है. जो हमारा सबसे बड़ा बैकबोन था फिल्म्स का, हमारा म्यूजिक, उसका वो गोल्डन पीरियड मुझे नहीं दिखता. ये बात कई लोगों से मिलता हूँ, स्पेशली जो हमारे फिल्म मेकर्स भी हैं, और वही कहते हैं यार क्या हो गया म्यूजिक का, क्या हो गया. बोला आप ही तो थे, आप ही नहीं किया है, अभी आप खुद ही कंप्लेन करोगे तो कैसे होगा यार. बट व्हाटएवर हैपेंस, समटाइम्स you get carried away with market trends and things like that. But I have a feeling it's people have realized that music, like you said, is an integral part of not just the films, of our society, of our our culture. So we have to start paying a little more attention to timeless music. अब क्या हो गया, because you just want a song that will, the graph ऐसा होगा, उसके बाद गिर भी जाए तो for the next 3 months ये गाना रूल करना चाहिए. Next 3 months का ट्रेंड क्या चल रहा है, उस तरह से गाने बन रहे हैं, which is why there's an issue. But of course, coming back to reality shows and coming back to singers, that was more innocent. It was more there was no script. कुछ भी हो जाता था, हम लोग रिएक्ट कर लेते थे, कुछ गा लेते थे. अगर किसी का गाना पसंद भी नहीं आता, कह भी देते थे, वो बेचारा रो भी देता था, बाद में इम्प्रूव कर देता था. तो वो सारी चीज़ें होती. अभी तो जब आगे था फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, आई लव इट, फैंटास्टिक, सब यही चल रहा है. So it's you scratch my back, I scratch your back, and it's all mutual admiration and it's all beautiful. So somewhere in that sheen and shine, the innocence and the simplicity that we used to have in those days is missing. And I miss that. आज सोचो, आज मैं इंटरव्यू करने के लिए बाल बना के आया हूँ. हाँ, वहाँ शो के पहले थोड़ा पानी वानी मार के करके खड़े हो जाते हैं. और आपके सामने पेश है आपका फेवरेट शो. शान, क्योंकि आप इतने अरसे से इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ये मुझे आपसे बस समझना था, क्योंकि आप इतना अरसा यहाँ बिता चुके हैं. कॉन्सर्ट्स का जो एक कल्चर हमारे देश में है, व्हेन वी लॉस्ट के ऑल्सो, उस टाइम पे शायद पहली बार हम में से लोगों ने रियलाइज़ किया कि हम अपने सिंगर्स को किस तरीके से, किस एटमॉस्फेयर में कैसे रख के ट्रीट करते हैं. एंड देन आए दिन हम ये चीज़ें सुनते रहते हैं कि सिंगर्स कैसे कॉन्सर्ट्स में मिसबिहेव करते हैं अपने फैंस के साथ. क्या आपको लगता है हम एक डिग्निटी, एक सही तरीका कॉन्सर्ट्स का, सिंगर्स को सही से डील करने का, वो सब हाइजीन जा चुका है? नहीं, आई थिंक इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द स्टैचर ऑफ द सिंगर,
उनकी मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, द राइडर, ये वो उस हिसाब से ही आता है. आई हैव स्टार्टेड डूइंग स्टेज कॉन्सर्ट्स फॉर 50 रुपीज़, छाता पकड़ के बारिश में भी गाने वाने किए हैं. सो यू नो आई हैव सीन द एंटायर जर्नी. आपने शो किया, आप बोले अरे अरे भी पैसे आ रहे, फिर पैसा आया ही नहीं, अरे वो पैसे लेके वो गाड़ी खाई में गिर गई है. तो यू नो ऑल काइंड्स ऑफ क्रेजी सिचुएशंस हैव गॉन थ्रू. So I've seen the whole journey. You know, you learn from your mistakes. The one thing that an artist can never do is disrespect your audience, because the audience are there because you're singing for them. There are certain very irritating elements in the audience that you have to deal with just for sake that you can perform. क्या होता है, कई बार आप परफॉर्म कर रहे हो, एकदम सामने कोई कंटिन्यूसली आपके साथ बदसलूकी कर रहा है एंड उनको मज़ा मिलता है, या फिर ज़्यादा ओवर एंथुजियास्टिक, जब भी कुछ हाथ पकड़ने आ जाते हैं, ये करने आ जाते हैं. सो इट कैन स्टार्ट वर्किंग, स्पेशली सिंगर्स हु सिंगिंग लाइव, यू हैव अ बैंड, यू हैव एन ऑडियंस टू एंजॉय, तो दैट कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेड. बट कुछ भी हो जाए, यू हैव टू कीप योर कूल. You have to maybe make a joke out of it, you know, explain to him in a funny way, or even you know, ताने भी दे दो, वहाँ तक कर लो. But audience है, उस वजह से आप हैं, and you know, without that it doesn't make any sense. So sometimes sound is bad, band is not in cue, but you can't let that show. You have to, like they say, राज कपूर साहब ने कहा था, the show must go on. आपकी बहन सिंगर, अब आपके दोनों बेटे म्यूजिक में हैं, ये फैमिली लेगेसी अभी बेटों के साथ आगे कहाँ जा रही है? हाँ, मेरे पिताजी बहुत कमाल के सिंगर कंपोजर थे, मेरे दादाजी थे, तो ये तो अभी 4th जनरेशन अच्छा खासा आ गया है. कहीं ना कहीं वी Mukerjees are also making a place for us in the industry. लेकिन of course it's very exciting. मैंने कभी इतना encourage भी नहीं किया था अपने बच्चों को. दोनों बहुत अच्छे थे स्टडीज़ में और बहुत सारे, I mean good sports, everything. क्या करें, मेरे जीन्स मिले थे उनको, तो they had no choice. लेकिन they decided and chose to take up singing. So I was a little worried because you know today singing has become more of a passion. It should be more of a passion. As a profession, it's very difficult because कोई ऐसा स्तर नहीं, कोई ऐसा you know fixed नहीं है कि ये करने के लिए करने के बाद ही आप सिंगर बन सकते हो. आज कुछ ऐसे सिंगर्स हैं जो जिनसे मतलब कोई और उससे भी बेहतर गा दे, बट यू नो उनकी एक पर्सनैलिटी है, कोई ऐसी टोनैलिटी है, सो यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू वर्क. सो इट्स वेरी ट्रिकी टू मेक अ प्रोफेशन और मेक अ करियर आउट ऑफ सिंगिंग. बट when the passion is there and he wants to do it, you can't stop them. And they're doing so well and they're putting a lot of hard work. So I said, करना है तो पूरी तरह से करो, put in everything. And so of course my older boy, the one thing that doesn't get to me, technology, he's fantastic with that. He's a fantastic producer, pianist. So he's brilliant with producing music. Younger boy Shubh, वो गाना भी गाता है, गिटार भी बजाता है, पियानो भी बजाता है, डांस भी करता है, बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा है, दिखता भी अच्छा है. So he's a complete package. He's a superstar singer. Hopefully, fingers crossed. Fingers crossed. Lastly, Shaan, अभी आप मानेंगे नहीं, जब मैंने गूगल पे आपका नाम डाला तो जो सबसे ज़्यादा थ्रेड में मुझे जो एक चीज़ आई, शान इतना क्यों नहीं गाते? Why Shaan doesn't sing so often? And I was like, मुझे शान से पूछना है. And then वो एक डंकी का जो आपका एक गाना था जो भी आई थिंक वो रिलीज नहीं हुआ, जो आपने मैं आपको किस्सा बताता हूँ, नॉट दैट आई फेल फॉर इट मच, बट एक कोई कैसे को एक होता है ना सूटसेयर टाइप का, आपका अभी ऐसा ही खत्म हो गया प्लेबैक का, हंसते हंसते बोल दिया था मुझको. तो तब से तो और भी जिद पे हूँ कि यार कुछ करूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके कुछ होगा. आई जस्ट बिलीव इन डेस्टिनी एंड आई थिंक व्हाट इज मेंट टू हैपन इज मेंट टू हैपन. बट एट द सेम टाइम आई एम अ सिंगर. वॉइस को आज भी रियाज करके ही आया हूँ. वॉइस को अपने को हमेशा यंग रखना है, सही रखना है, तंदुरुस्त रखना है. यू नो कर बी ओपन विद ऑल जॉनर्स ऑफ म्यूजिक. सो आई एम रेडी, क्योंकि पता नहीं शायद 75 की उम्र में फिर से गेट खुल जाए. फ्रॉम 75 देन आई विल हैव अ करियर टिल 90. क्या करें? आई एम जस्ट किडिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग यू व्हाट इज इन योर कंट्रोल, यू कैन टेक केयर ऑफ इट. व्हाट इज नॉट, सवाल पूछ के कोई फायदा है नहीं. आई बिलीव कि देखिए अभी अब मैं क्रेजी फॉर किशोर कर रहा हूँ, आई एम कंपोजिंग, आई एम डूइंग अदर थिंग्स. So ये सब शायद नहीं हो पाता if I was still as busy as I used to be 10-12 years ago. So every door shut is a new opportunity. मुझे जाने से पहले आपकी आवाज़ में गाना सुनना है. मुझे मेरी टीम मार देगी अगर मैं आपके साथ आपका एक गाना सुन के नहीं जाऊंगी. फरमाइश सर, आँखों पे जो भी गाना आप मेरे लिए तो मेरी फेवरेट मेमोरी वुड ऑलवेज बी मुसु मुसु हासी. आई कैन नेवर गो हेड. मुसु मुसु हासी देव न लाए लाए, मुसु मुसु हासी देव, हे जरा मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे अंकिता. I will keep this forever with me. But thank you for the joy, thank you for the smiles, and thank you for always singing with a smile because it reaches. That's sweet. Thank you. And I hope that I know हम थोड़ा
पीछे चले गए, but I really wanted to relive that good times of music, which I always believe. It's coming back. I'm hoping it's Yes. coming back and coming back with a bang, and we just get to see some good music. Sure. hear some Otherwise, good you can music. always listen to Crazy for Kishore. Always All the do great that. songs. किशोर दा का कोई लास्ट एक गाना अपने को सुना सकते हैं जो एक गाना आपके लिए एक बेंचमार्क रहा है हमेशा? Oh my God. आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल ये भी जाने वाला है. So I believe live every moment, enjoy it, and who knows कल क्या होना है, लेकिन आज तो हमारे पास है. थैंक यू सो मच शान फॉर डूइंग दिस. आई विश और वक्त मिलता, लेकिन कभी और जरूर मैं आपके पास आऊंगी फिर से वो किस्से कहानियां सुनने. जरूर. जरूर. थैंक यू. Thank you. Hi, this is Shaan and you're watching me on Bollywood Bubble.